So first let us understand what is meant by E-extension or cyber extension. Cyber extension and E-extension are more or less used as synonymous. That is, the meaning is same for E-extension and extension. They are used for each other. So here the cyber extension and E-extension, these are the extension approaches. These are the extension approaches wherein ICT tools, that is information communication tools, are used by various service used by which various services are delivered to the client to fulfill the objectives of e-extension or साइबर एक्सटेंशन. मतलब जो भी एक्सटेंशन के ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन फार्मर्स तक पहुंचानी है, उसके लिए हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टूल्स यूज करते हैं, तो उसे हम साइबर एक्सटेंशन बोलते हैं या ई एक्सटेंशन. So according to Sharma, he has defined cyber extension as extension over the cyberspace. That is, which means using power of online networks, computer communication and digital interactive multimedia to facilitate dissemination of agriculture technology. So शर्मा ने साइबर एक्सटेंशन को कैसे डिफाइन किया है, जहां पे हम ऑनलाइन नेटवर्क्स का जो पावर है, जहाँ पे कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम डिजिटल इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया है, वो सारे यूज करके एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को डिसेमिनेट करना, मतलब लोगों तक पहुंचाना, तो उसे हम साइबर एक्सटेंशन कहते हैं. Now, cyber extension includes effective use of information and communication technology, that is ICT, and then national and international information networks, internet, expert system, multimedia learning system, and computer-based training systems to improve the information access to the farmers, extension worker, research scientist, and extension managers. जो भी cyber extension में ICT के tools है, इंटरनेशनल नेशनल नेटवर्क्स है, एक्सपर्ट्स की सारी टीम है, मल्टीमीडिया, हम लर्निंग सिस्टम्स, कंप्यूटर्स, उससे क्या आता है, सबको इजीली एक्सेस, इंफॉर्मेशन की इजी एक्सेस मिलती है, फार्मर्स को हो, एक्सटेंशन वर्कर्स, रिसर्च साइंटिस्ट, और एक ही जगह पे इंफॉर्मेशन होती है और उससे इजीली कोई भी एक्सेस कर सकता है. So cyber agriculture extension is an agriculture information exchange mechanism over the cyberspace. जो भी हम इंटरनेट कहते हैं या वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, थ्रू दैट जहाँ पे एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है. द साइबर स्पेस, इट इज द इमेजिनरी स्पेस बिहाइंड द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स. जो भी कंप्यूटर नेटवर्क्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो इमेजिनरी स्पेस को हम साइबर स्पेस कहते हैं, जिससे टेलीकम्युनिकेशन होता है. इट यूटिलाइजेस द पावर ऑफ नेटवर्क्स, computer communications and interactive multimedia to facilitate the sharing mechanism. So this is about the cyber extension. So what all information can be provided through cyber extension? So Sharma, he has mentioned few of the information. We can provide large amount of information through cyber extension. In that, few are, first is weather, that is daily information of maximum minimum temperature, day length, direction of and speed of wind, rainfall, relative humidity, or even weather forecasting. How will be the weather for today? So these all things can be easily disseminated using the cyber extension. Then alert, information regarding disaster, sudden change in weather, outbreak of disease and insects. Such type of alert can be given to the farmers. Then information related to insurance, that is detailed information of insurance to farmers. इंश्योरेंस का फॉर्म फिल करने का टाइम क्या है, कौन से क्रॉप के लिए इंश्योरेंस दिया जा रहा है, एग्रीकल्चर एसेट्स, ट्रैक्टर, उनके लिए कोई सब्सिडी है, वो सारे इंफॉर्मेशन हम फार्मर्स तक पहुंचा सकते हैं. देन जनरल अवेयरनेस लाइक अबाउट वैक्सीनेशन, क्लीनिनेस, हेल्थ, फैमिली प्लानिंग एंड न्यूट्रिशन. So these are the general awareness also we can pass through cyber extension. Then rural finance, that is information about microfinance and subsidies. अलग फार्म क्रॉप लोन मिल रहा है, किस माइक्रो फाइनेंस अवेलेबिलिटी है फार्मर्स के लिए, वो सब हम फार्मर्स तक पहुंचा सकते हैं. देन नेक्स्ट इज एजुकेशन अबाउट फार्मर्स ट्रेनिंग. जहाँ पे कहीं ट्रेनिंग हो रहा है किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो फार्मर्स को उन फार्मर्स तक वो मैसेज कैसे हम साइबर एक्सटेंशन के द्वारा पहुंचा सकते हैं. एंड ऑल्सो एजुकेशनल नॉलेज ऑफ फॉर इस चिल्ड्रंस, अगर उन्हें फार्मर्स के बच्चों को अगर कोई प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो उन्हें एजुकेशनल ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, तो वो बताने में भी
ये साइबर एक्सटेंशन हम यूज कर सकते हैं. देन इन ऑल्सो इन एनिमल सेल, द डिटेल रिगार्डिंग लोकल एनिमल, well known diseases in animal, better breeds, how to have the balanced feed for animal, shade management, health of animal, these all information can be passed through cyber extension. Then advantages of cyber extension: first, information can be provided quickly to the farmer within few 1 to 2 seconds. Large information can be disseminated. Then around the clock services, that is 24 hours services can be given through cyber extension. The information can be accessed from any place of the world as it is the interconnected or net linked to network, so it can be accessed from any point of the world. Then helpful in enhancing the communication efficiency. अगर 1-2 सेकेंड में ही इंफॉर्मेशन पास हो रही, विद इन नो टाइम इट इज पासिंग, देन alteration in message or disturbance in message is also less, so it will increase the communication efficiency. Then preserves the quality of message. तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होता, मैसेज में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, क्वालिटी ऑफ मैसेज प्रिजर्व होती है. Then experts can be contacted directly. Farmers can contact experts directly, for example through Kisan call centers. This is also one of the application of cyber extension. Then per unit cost is less compared to traditional system of extension. जो भी ट्रेडिशनल एक्सटेंशन सिस्टम है उससे पर यूनिट कॉस्ट लेस है साइबर एक्सटेंशन का. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ साइबर एक्सटेंशन. Then limitations. Limitation is, first main thing is, in rural areas we don't have proper network connection. Still we are struggling to get proper network connection in rural areas. So lack of reliable telecom infrastructure in rural areas. Then erratic or no power supply. Electricity supply रूरल एरिया में प्रॉपर नहीं होता, कई बार लोड शेडिंग या पावर कट, बहुत लंबी पावर कट होती है रूरल एरियाज में, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकते हैं. देन लैक ऑफ आईसीटी ट्रेन पावर. आईसीटी ट्रेन मैन पावर है विलेजेस में, लेकिन उनकी विलिंगनेस है कि उस एरिया में सर्व करने की, वो भी देखने में. सो लैक ऑफ ट्रेन मैन पावर प्लस द पीपल आर नॉट विलिंग टू सर्व इन रूरल एरियाज, दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम. देन लैक ऑफ कंटेंट, दैट इज the content should be in the local language. Sometimes many of the information is found in English, तो local language में वो information नहीं मिलती, तो इसके वजह से प्रॉब्लम होते. Then low of purchasing power of rural people. जो भी मोबाइल स्मार्टफोन वो कॉस्टली है, लैपटॉप कॉस्टली है, कंप्यूटर कॉस्टली है, तो रूरल ये जो हमारे स्मॉल फार्मर्स है उनके लिए कॉस्टली हो जाता है, परचेजिंग पावर उनकी नहीं है इतनी. देन लैक ऑफ होलिस्टिक अप्रोच एंड इश्यूज ऑफ सस्टेनेबिलिटी. दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ साइबर एक्सटेंशन. Then next we will see IT and ICT. IT is information technology, which refers to computer based technology and telecommunications. Here IT refers to entire industry that uses computer, networking, software and other equipments to manage the information. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, जहां पे हर एक इंडस्ट्री जहां पे कंप्यूटर्स, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर और जो भी अदर इक्विपमेंट्स इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं, तो उसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं. हम जनरली आईटी डिपार्टमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसमिटिंग एंड रिट्रीविंग एंड प्रोटेक्टिंग द डिजिटल इंफॉर्मेशन. जो भी डिजिटल इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, उसे रिट्रीव करते हैं एंड प्रोटेक्ट करते हैं. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एनी आईटी डिपार्टमेंट इन एनी कंपनी. नेक्स्ट development in this IT was ICT, that is information communication technology. As you can see, it is integration of IT and communication. मतलब यहाँ पे जो भी कंप्यूटर बेस्ड जो नेटवर्किंग है उसे हम ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज, ऑडियो वीडियो प्रोसेसिंग, टेलीफोनी से कनेक्ट करके जहां से हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं. सो आईसीटी इज द एक्सटेंडेड एक्रोनिम ऑफ आईटी. ना आईसीटी में कौन से टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होते हैं? टेक्नोलॉजीज दैट कैन बी यूज्ड टू इंटरलिंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवाइसेस सच एज पर्सनल कंप्यूटर्स विद द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज सच एज टेलीफोन्स. जहाँ पे आईटी के टूल्स जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर्स है और सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट्स है, वो
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसे टेलीफोन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क से हम कनेक्ट करते हैं तो उसे हम आईसीटी कहते हैं. मतलब पीसी लैपटॉप एंड टैबलेट दीज आर द आईटी टूल्स connected with the email they become the ICT tools. So these are the best example for ICT. Next we'll see some developments, recent development in agriculture extension where in modern information technology was used to disseminate information. Now information it is the important resource in modern agriculture. मॉडर्न एग्रीकल्चर में इंफॉर्मेशन राइट इंफॉर्मेशन एट राइट प्लेस राइट फार्मर को मिलना बहुत जरूरी है. सो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ दिस क्या हुआ है कि फार्मर्स और एक्सटेंशन वर्कर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिली है जहाँ पे वो टेक्निकल एंड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन इजीली और इफेक्टिवली फार्मर्स तक पहुंचा सकते हैं जिससे एक फार्मर को डिसीजन मेकिंग में इजी हो जाता है. और मॉडर्न फार्मर जो है वो बिजनेस ओरिएंटेड है तो उन्हें राइट क्रॉप राइट एनिमल रेज करने जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है वो उन्हें उसके बारे में इंफॉर्मेशन इजीली पास हो सकती है. तो इसे सब मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज आर लिस्टेड हियर. फर्स्ट इज द व्यू डाटा. व्यू डाटा में क्या होता है दिस ट्रांसमिट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंट्रल कंप्यूटर बाय टेलीफोन लाइंस टू द स्क्रीन ऑफ द होम टेलीविजन सेट और अ कंप्यूटर. जो भी सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम है उससे हम एक सेंट्रल यहाँ पे कम्युनिकेशन कंप्यूटर सिस्टम है उससे सारे वो पर्सनल पीसी या टीवी स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की जाते हैं तो उसे हम व्यू डाटा कहते हैं. यहाँ पे द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन स्टोर इज लिमिटेड ओनली बाय द कैपेसिटी ऑफ इट्स कंप्यूटर. जहाँ पे ये सेंट्रल कंप्यूटर है उसकी कैपेसिटी कितनी है उतना ही वो इंफॉर्मेशन हम सेव कर सकते हैं. Now farmers can interact with the central computer containing the database. He can request the computer to make certain calculation by combining the information in the database with the information from his own farm. अगर कोई calculations करना है मतलब fertilizers कितना यूज करना है वो calculation अगर करना है तो हम farmers can request the central computer to make such calculations. Then next is the telecast. It is somewhat like view data in which printed information is telecast through television rather than telephone line. View data में जो information है वो telephone line के द्वारा पास की जाती थी. यहाँ ना कि telecast में printed information television through पास की जाती है. Then next is the microcomputer. Through microcomputer on the farm, farmers can process the accounts and data from their farm production. Many extension agents in industrialized countries now have microcomputers and make the similar calculation for the farmers. Farmers के जो accounts है, accounts balance sheet वो calculate करने में micro computer help करता है और वो developed countries में ये procedure हो रही है extension agents के पास ही micro computers है और वो farmers के लिए सारे calculations, accounts के जो calculations है वो करके दे रहे हैं. Next is the network system. Network system in which view data is connected with the microcomputer of the extension. ना microcomputer and network वो connect हो रहा है जिससे क्या होता है जो भी क्या होता है use of data और computer programs from view data in microcomputer और process the data from farm in the view data mainframe. जो view data का main computer है उसमें data रहता है वो और फार्मर्स का डाटा यूज करके हमें जो कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स है वो सिंपल फॉर्म में माइक्रो कंप्यूटर एनालाइज करके देता है. दिस नेटवर्क सिस्टम बिकम्स इंपॉर्टेंट बिटवीन द फार्मर्स एंड द सप्लायर्स एंड द कस्टमर्स. दे कैन बी यूज्ड फॉर एक्सटेंशन इंफॉर्मेशन व्हेन दे हैव बीन इंस्टॉल्ड फॉर दैट रीजन. एक्सटेंशन इंफॉर्मेशन पास करने में भी हम नेटवर्क सिस्टम यूज कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज द ईमेल. ईमेल इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल in which we send the message through the computers, in which it is based on use of computers for transmission of message rather than personal postal system. जो हम पहले पोस्ट से लेटर्स भेजते थे उससे उसके ऑप्शन में अल्टरनेटिव में अब ईमेल आया जहाँ पे हमें एक 1 to 2 मिनट्स में हम मेल एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं 1 to 2 मिनट्स में और हमें पोस्ट प्रोसीजर का वो वेट नहीं करना है. हमने जो मैसेज टाइप करना है वो हमारे पीसी में टाइप कर सकते हैं, ईमेल आईडी ईमेल एड्रेस दे सकते हैं और वहां से नेक्स्ट ईमेल आईडी तक हम पास करते हैं और एक ही बार में हम
more than hundreds of email, we can send the same message to more than 100 people. So this is the advantages of ईमेल. यहाँ पे जो डिले था पोस्टल ट्रांसमिशन मैसेज में 4-5 दिन लगते थे, वो अब 1-2 मिनट में ही मैसेजेस ट्रांसफर हो रहे हैं. नेक्स्ट इज फैक्स. फैक्स इज द डिवाइस यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट. इट इज सेम लाइक द ईमेल. ईमेल में क्या होता है, टाइप्ड मैसेज होता है, वो स्क्रीन पे आ जाता है. यहाँ पे रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हो, फोटोग्राफ्स हो, वो इलेक्ट्रॉनिकली हम ट्रांसफर कर सकते हैं. एक जो फैक्स मशीन है वहां पे वो जो भी डॉक्यूमेंट है वो स्कैन किया जाता है. दैट रिटर्न मटेरियल विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स एंड देन इट इज sent to the similar receiving fax machine, and that receiving fax machine will convert the electronic signals into the written or graphic form. So by such we can send the scanned copy of the original documents. So typical fax machine can transmit document of A4 size in less than 1 minute over the thousands of kilometers. So this is the same as the normal telephone line. Fax number has also the telephone numbers with same STD and ISD codes, and through which we can send the documents, scan and send the documents from one place to another place within no time. Then 7th is the internet. Everyone is familiar with the internet. Everything is working on the internet now, and now this internet is being used to transmit the information from experts to the farmers. So over the internet, each and every person over on the world is connected through this internet. Maybe it be on the smartphones, personal computer, laptop, tab. So everything is connected, and from internet we can get up-to-date information. We can pass the up-to-date information about business, stock market, educational, what are the research. For farmers, we can send the weather report, market predictions. So these all information can be passed through internet. Then optical communication technology. Then optical, it is the use of light waves for communication by using the optical fiber. So optical fiber, it is very thin glass fiber wherein the light waves are being transmitted as for the passing the information. So this much small information of optical technology is enough. Then next is the cellular mobile. Cellular mobile, it is the before we had the landlines where we had the fixed one. Now we have cellular mobile which we can take our mobiles and go anywhere. So that is not the fixed telephone. It is the another popularly known as car telephone. So we are not fixed to any place. Wherever we go, we carry our phone and we can pass our messages. Next is radio paging. This is called as poor man's cellular telephone. So based on the some pagers, if one gets the message on his pager, he was required and should call up that number which flashes on his pager. So through signals, maybe it may be the buzzes, based on that messages were passed, and suppose the message was to call so and so number, then he was taking that message, then he was going to public booth, and then from there he was calling. So this is the radio paging, very rarely used nowadays. Then very small aperture terminal technology, that is VSAT tech service. This service provides satellite based network for business communication using cost effective VSAT technology. तो जो भी बड़े बड़े बिजनेस एमएनसीज है, तो वहां पे हेड ऑफिस को और बाकी के सारे जो उनके सब ऑफिसेस है उनसे कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है. देन इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, दैट इज EDI. It enables two organizations, usually a customer and a supplier, to exchange routine documents such as purchase order, invoice, using standard electronic forms and their own computer linked through the service provider. It is faster, cheaper and reliable mean of exchanging the export documents. जो भी ट्रेड के डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सचेंज करने के लिए ये यूज किया जाता है. Then voicemail, the one who don't like to use the mobile phone, they will take the voicemail. Same, the telephone number is given for the voicemail, and whenever they have time, they can access to the mailbox and they can listen their voicemails. So it's just like owning the post box in post office. Then next is the video conference. Video conferencing is done through laptops or personal computers, where we can connect
video with each other from wherever the person may be, anywhere on the anywhere at any point on the world. We can connect through video conferencing, through which we can give them training, which we can give them information, we can show some pictures, videos. So this is one of the ICT tool. The next is the Kisan call center. Now Kisan call center in the country, it is an impressive telecom network both in private and government sector. Over 9 lakh villages have public telephone in our country. Now public telephone as well, and now everybody is having the personal computer. So this Kisan call center scheme was started in 2004. The Kisan call centers have been functioning from 21st January 2004, and the toll-free number for Kisan call center is 1800-180-1551. So this is 1551. This is the toll-free number for communication for Kisan call center, where farmers can ask their questions. So the time for call center is 6 a.m. to 10 p.m. except on Sundays. Sundays and on gazetted holidays, here voice recording mode will be added. But from 6 a.m. to 10 p.m. the call centers will be open. The objective of this scheme was to make agriculture knowledge available at free of cost to the farmers as and when desired. मतलब जो भी farmers के queries हो, उन्हें कोई problem आ रहा है, उनको कोई information questions है, तो वो सीधे कॉल करके एक्सपर्ट से वो अपने सारे क्वेश्चंस को आंसर उन्हें मिल जाता है. तो इस ऑब्जेक्टिव क्या था कि एग्रीकल्चर नॉलेज है जो फार्मर्स को जब चाहिए तब वो मिल जाए. सो दिस इज द main objective. The Kisan call center is available all over the country. At present, the call center services are available at common toll-free phone number, that is 1551 1800-180-1551. This is the toll-free number. Then the calls are received at 13 call center, wherein 116 agriculture graduates are there to answer the queries. Now, here we'll see the operational mechanism of Kisan call center. It operates in 3 levels. Level 1, it is handled by the agriculture graduate, who are the first person to answer call. Level 2 is the expert related to that crop, and level 3 is the management team. So we'll see one by one in detail. Level 1, here when the farmers call the call center here these are the first ones to pick the call, who are after a short welcome message, they take the basic information and query of the caller. These details are fed in the computer located next to the operator. This operator is the agriculture graduate. He asks the information about the farmer, their questions, and he will feed it in the computer. At first level, receiver of the calls who also feeds into computer the question being asked by the farmer. जो भी farmer question पूछते हैं वो भी सारे information वो computer में feed किया जाता है. Now first level, preferably they are the agriculture graduates with the rural background, knowing the local language. जिन्हें local language का पूरा information है तो वो local language में communicate करते हैं. Now they would be in the position to answer majority of questions likely to be asked by the farmers. उन्हें majority of questions वो answer करने की position में होते हैं. First level operator. Then second level पे subject matter specialist या experts है from various research stations, ATICs, KVKs, agriculture colleges, universities. So these are the experts. यहाँ पे अगर first level पे operator को कोई questions के answer नहीं आ रहे तो वो call क्या करते हैं, वो subject matter specialist या experts को forward किया जाता है. लेकिन यहाँ पे कॉल जैसे ही फॉरवर्ड होता है, जो भी उन्होंने पहले लेवल पे इंफॉर्मेशन फार्मर से ली थी, उनकी इंफॉर्मेशन और उनके क्वेश्चन वो सारे भी पास किए जाते हैं थ्रू नेटवर्क, दैट इज थ्रू कंप्यूटर. So whenever the call is transferred, the specialist will first only he will be having all the data of farmer and the question asked, so that again farmer need not repeat everything whatever he has said to the first. Also whatever solutions here the first level has given, that also will be added in that. So here there will no repetition of the same information again. And in case here if the questions are not answered, then system will
system will take the information or everything, and they will revert, they will call back the farmer later within 72 hours after discussion with the specialist or by discussing with the scientist. So this is the level 2 of trial. And then level 3, it is the nodal office who receives the questions that has not been answered by the first and second levels, and then appropriate replies will be given for the unanswered question within the 72 hours of the receipt of question. Then we have knowledge management system. Knowledge management system is a software tool which has been developed by the TCL, that is Telecommunication Consultants India Limited, a government of India enterprise. The Kisan call center shall be accessible on identified telephone number, will provide all technical assistance to the caller and will record the queries along with the पर्सनल डिटेल्स. सो जो भी डिटेल्स वो फील करते हैं वो स्टोर होते हैं वो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम या सॉफ्टवेयर में होता है. So here this is the representation of all the 3 levels. Here the call routes will be given. Call farmer will call. It will be through BSNL. Then the first level functionary, that is agriculture graduates, they will pick up the call. Functionary greets the farmer with the opening phrase. Then they will capture all the data. Then if there are technical queries on crop production, crop protection, horticulture, whatever possible, they will try to answer here. They'll even they will feed name, address, contact number and their question. Then if they are unable to answer the query, then they will transfer it to level 2. They transfer the call and screen on the appropriate officers at the level 2. Admin related call dealing with government or scheme subsidies, they will try to answer. If not, they will transfer it to level 2. And if level 2 here they are resolve the question, they will close the call with the closing phrase. If not resolved, they will pass through the third level, that is third level of management nodal office, and they will set back to the, they will solve the query and within 72 hours they will contact that farmer and they will give the solution. So this is the representation of working of Kisan call.